Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we are starting exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 एग्जामिनेशन जिसका नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च में। उसी के लिए हमने ये सीरीज लॉन्च किया है जिसमें हम लोग करेंगे डेली 15 MCQs। ओके, तो उसमें जो भी टॉपिक हम लेंगे उसी के जो प्रिपरेशन होगा ऑल दैट विल बी डूइंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs। बहुत एक्सक्लूसिवली बहुत डिटेलली हम लोग ये करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं लेबर लॉस का ही टॉपिक है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जिसमें दो पार्ट्स में हम लोग करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में हम लोग करेंगे अनदर 15 क्वेश्चन, सो दैट जितने भी उसमें सेक्शन है जो 17 सेक्शन है वो सही से हम लोग कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ MCQs। So the first question that comes here is, what was the underlying objective of introducing the Payment of Wages Bill 1933 in the context of labor reforms in India? हमने अभी बोला है कि पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1936 एंड यहाँ पे 1933 है, तो मतलब उसी के हिस्ट्री के बारे में है ये। 1926 में ही द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया था कि वाई देर आर लॉट ऑफ डिलेज इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इन इंडस्ट्री, उसको हम लोग किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं, उसी के लिए उन्होंने कुछ रिसर्च रिव्यूज वो सब करके कुछ मटेरियल इकट्ठा किया। ऑल दैट दे हैव पुट बिफोर द रॉयल कमीशन ऑन लेबर विच वाज अगेन अपॉइंटेड इन 1929, जो 1929 में अपॉइंट हुआ था। तो इन्होंने पूरा अपना जो भी समझा है उसको अच्छे से रिपोर्ट रीड करके उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, बेस्ड ऑन विच 1933 में पेमेंट ऑफ वेजेस बिल आया था। उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। सो हियर इन दिस केस द मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर दिस द पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 was to mitigate delays in wage payments and safeguard industrial workers' right in wage disbursement. Okay. Yes, the next question here comes is, which of the following statements accurately describes the role of the Royal Commission on Labor in the legislative development of the Payment of Wages Act 1936 within the broader context of labor reforms in colonial India? तो हमने इस यहाँ तक डिस्कस किया था कि रॉयल कमीशन ने अपना वो जो भी रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट किया था, बेस्ड ऑन विच पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 को टेबल किया था। ओके, बट आफ्टर दैट वो पास नहीं हुआ वो बिल। सो व्हाट दे डिड वाज, उसी based on the same principles a study group was formed, and that study group based on the same principles of the payment of wages bill 1933 उन्होंने एक नया रिपोर्ट मतलब एक नया बिल उन्होंने टेबल किया था, and that was the in the form of act it was passed, and that was the Payment of Wages Act 1936. So here in this case the correct answer is B, that is only 2 and 3 are correct. The commission identified systemic wage related grievances including delays and unjust deductions which led to the drafting of the Payment of Wages Bill 1933. Okay, कौन सा, based on the Royal Commission, and the Commission emphasized the need for the industrial tribunals to resolve wage disputes influencing the provisions of the Payment of Wages Act 1936. लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस एक्ट को ना, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को टेबल नहीं किया है। ठीक है। Now comes the third question. Which of the following accurately reflects the key modifications incorporated into the Payment of Wages Bill 1935 in contrast to the Payments of Wages Bill 1933, considering the historical context of labor reforms under the British colonial rule in India? So अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस किया है, so I expect you all to answer this question without any hesitation. यस, आप ट्राई कर सकते हो इसको।
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है द 1935 बिल मेंटेन्ड द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द 1933 बिल, बट ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था in the earlier question, but underwent significant revisions to address earlier criticisms, especially regarding the structure of wage payment procedures. कुछ कई सारे reasons थे because of which the 1933 bill was not passed, and उसी से उन्होंने नया बिल, नया जो 1935 का बिल है उसको लॉन्च किया था, बट अगेन विथ ऑल द learnings, but the principles, fundamental principles were the same जो 1933 का बिल था उसी के बेसिस पे था. So here comes the next question. In the context of the Payment of Wages Act 1936, particularly under section 2, which of the following accurately defines the scope of the term appropriate government with respect to the regulation of wages in the oil fields, taken into account the legal and administrative framework of the colonial India? उस टाइम के colonial India का जो भी लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से इन्होंने जो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है उसमें सेक्शन 2 में क्लियरली कुछ डेफिनेशंस दिया था. वन ऑफ दोज इज द व्हाट एग्जैक्टली इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फ्रेम करेगा, किस तरह से होंगे, तो उसके लिए उन्होंने हर जगह पे एक वर्ड दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, दैट इज वाज द क्वेश्चन हैज टू आस्क. ओके, सो इससे पहले जो हम लोग देख रहे हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये एक्चुअली ऑफिशियली इनैक्ट हुआ था एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 23, 1936. ओके, उसी के बेसिस पे 17 सेक्शंस इन्होंने दिया था एंड उसमें सेक्शन 2 में एक्सक्लूसिवली डेफिनेशंस दिया था. सो कमिंग बैक टू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, so it is B, the central government, which this can be considered as the appropriate government, which is entrusted with the responsibility for regulating wages in strategic industries such as oil fields, mines, railways, given their national importance. And फिर बाकी इंडस्ट्रीज का कौन रहेगा, बाकी सब इंडस्ट्रीज का रहेगा स्टेट गवर्नमेंट. ओके, so coming to the next question. Consider the following statements regarding the definition of wages under the Payments of Wages Act. जैसे मैंने बोला था सेक्शन 2 में एक्सक्लूसिवली डेफिनेशंस दिया है उन्होंने. एज पर दैट, traveling allowance or the value of traveling concessions under explicitly included as part of the remuneration under the employment contract is excluded from the definition of wages. Remuneration for overtime work or holidays is included as part of wages irrespective of any separate contractual stipulations. Monetary compensation payable under the employment contract including salary, allowances or any form of payment is considered wages under this act. Additional remuneration such as bonuses is included in the definition of wages as long as it is explicitly stated as part of the employment contract or settlement. So यहाँ पे जो wages, अगर wage बोलेंगे, okay, इसमें जो अभी हमने मेंशन किया है एवरीथिंग दैट इज मंथली, दैट इज मॉनिटरी कंपेंसेशन, इट इंक्लूड सैलरी, अलाउंसेस, एनी अदर फॉर्म दैट इज पेएबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन फॉर देयर वर्क दैट दे हैव डन. उन्होंने जो काम किया है उसमें ये सैलरी, अलाउंस और एनी अदर फॉर्म जो अगर उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, सो देन दैट वुड बी provided, which includes remuneration payable under any award or settlement. अगर कुछ हुआ है कोर्ट से वो इसमें इंक्लूड होगा, एंड ओवर टाइम वर्क किया है उसने या फिर एनी लीव पीरियड में उन्होंने वर्क किया तो वो इंक्लूड होगा. एडिशनल रेम्यूनरेशन, उसको हम लोग बोनस भी बोल सकते हैं, कुछ और भी तरीके से. कई बार ऐसा होता है कि बोनस की जगह पे वो बोलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस टाइप का कुछ ऐड कर देते हैं, वो भी वेज ही कंसिडर किया जाएगा. एंड ऑल्सो अगर कुछ टर्मिनेशन हुआ है एज पर द लॉ एंड अंडर द लॉ, इफ अगर बोलते हैं कि कुछ अमाउंट इसमें पे करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज वेजेस ओनली, और कोई करंट लीगल स्कीम में है.
and but it does not, wages does not include any bonus that is not forming as part of the remuneration payable. अगर उसके remuneration इसमें नहीं आ रहा है तो that would not be considered household accommodation या कुछ और amenity या फिर any contribution paid by the employer to the provident fund, gratuity, ये सब wages में include नहीं होंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे. So यहाँ पे all these statement, यहाँ पे traveling allowance also is not as part of the wages, that is true. So hence all these statements are correct in this case. Next question हमारा आता है, under the Payment of Wages Act 1936, the jurisdiction of the central government as the appropriate government applies to which of the following industries? Select the correct answer using the codes below. ये हमने दिया है आपको options और ये आपके codes है. और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट आता है मेजरली, उसमें जो इंडस्ट्रीज आते हैं वो हमने डिस्कस किया था, एंड रेस्ट ऑल विल फॉल अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. सो इन दिस केस only the air transport services along with oil fields, mines, etc. that comes under the central government. The rest like your textiles, food processing, pharma and everything that will fall under the state government. So in this case the answer is C, only 2. Okay. So next question हमारा आता है, under the Payment of Wages Act 1936, the responsibility for ensuring the payment of wages to employed persons lies with which of the following? किसकी responsibility है payment of wages करना, जो पेमेंट करना है वेजेस का, एंड दिस एक्सप्लिसिटली कम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. सो इन दिस केस ये सोल रिस्पॉन्सिबल रहता है, यस इट इज द ओनर और द एम्प्लॉयर ओनली. ओके, वही तो है ओनर, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी. बट यस वो किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो गया तो मैनेजर, या कुछ इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट्स है तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर दिस. और अगर रेलवे से तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी पर्सन नॉमिनेटेड, एंड अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो जो भी पर्सन डेजिग्नेट किया है कॉन्ट्रैक्टर ने, वो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे मेजरली पेमेंट्स के लिए. बट अदरवाइज ऑन द होल, ऑन द टॉप कौन रहेगा? दैट वुड बी द ओनर और द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ हु हैज हायर्ड देम. सो उन्हें उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट्स ऑफ वेजेस के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम सेक्शन 4 of the same act related to the fixation of the wages. So the Payment of Wages Act 1936 regulates the payment of wages to employees, including the frequency of wage payments to ensure timely and fair compensation. Right? Which of the following statements is correct regarding the maximum permissible wage period under the Payment of Wages Act 1936? Now what is this wage period? Wage period वो है in respect of which wages should be paid to the employee for whatever work that he has done. जिन्होंने जो काम किया है as per the contract of the employment, उनको वो amount pay करना पड़ेगा during that particular period of time. Now वो period कितना होना चाहिए? See, फैक्ट्री हो या कोई भी हो, वॉट एवर माइट बी द केस, एस्टैब्लिशमेंट, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 month. ओके, सो ये 1 month और 30 days यही राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, within how many days must wages be paid to employees working in an establishment with fewer than 1000 workers? See, यहाँ पे हमने पहले देखा है कि वेज पीरियड क्या है ना, आफ्टर दैट व्हेन द लास्ट वर्किंग डे के बाद से अगर 1000 वर्कर्स से ज्यादा है उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो 10th डे एक्सपायरी ऑफ द, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डे फ्रॉम द लास्ट वर्किंग डे, दैट दे हैव टू पे. अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, fewer than 1000 workers, so in this case when workers are less than 1000, then before the expiry of the 7th day of the wage period, and wage should be paid always on a working day only. Okay, so here comes the next question. According to section 5, again same section say of the Payment of Wages Act 1936, the payment of wages to an employee whose employment has been terminated
मस्ट बी मेड विद इन वॉट टाइम फ्रेम. अगर उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है, किसी एम्प्लॉय को, कब तक उनको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, वॉट एवर द फुल एंड फाइनल टाइप का. सो हियर इन दिस केस अगर उस तरह से है तो ऑलवेज इट शुड बी विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द टर्मिनेशन डेट. ओके, एक और चीज हम लोग भूल गए हैं कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि विद इन 1000 मेंबर्स वर्कर्स है तो किस तरह से 1000 से कम है तो 7th डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द वेज पीरियड, एंड उससे ज़्यादा है तो 10th डे. उसी तरह से जैसे डॉक ये वाफ है या फिर जेटी माइन वर्कर्स, उनका कभी कभी टनेज के बेसिस पे उनका कुछ कमीशन टाइप का भी मिलता है. अगर उस तरह से है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टनेज अकाउंट्स, वो अमाउंट भी उनको पे करना पड़ेगा जिस दिन वो टनेज अकाउंट्स क्लोजर होंगे, कंप्लीट होंगे, वहां से विद इन 7 days. ओके, यस. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सेक्शन 6 से. सो सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 स्टिपुलेट्स दैट वेजेस कैन बी डिस्बर्स्ड टू एम्प्लॉयज थ्रू वेरियस मोड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. Now, which of the following statements is correct regarding the disbursement of wages under the Payment of Wages Act 1936? Okay, so here in this case, now when we talk about wages, how it can be paid? It can be paid in current coins, notes, check, or sometimes even crediting to a bank account. But see, यहाँ पे इन्होंने दिया है करंट, ओनली करंट कॉइन्स और नोट्स. नो, दिस इज नॉट ट्रू, एंड कोई लिमिट नहीं. एंड वेजेस कैन बी डिस्बर्स ओनली बाय चेक और बैंक ट्रांसफर, ये भी नहीं है. वेजेस कैन बी डिस्बर्स ओनली बाय क्रेडिटिंग टू ए बैंक अकाउंट एंड ऑल्सो द बैंक, उसका जो बैंक ब्रांच है वो जहाँ पे एम्प्लॉयर है वहीं पे होना चाहिए, ये भी गलत है. बट येस, वेजेस कैन बी डिस्पर्स इन एनी ऑफ द एबव मोड्स, दैट इज करंट कॉइन या फिर करेंसी नोट्स या फिर चेक या फिर क्रेडिटिंग टू द बैंक अकाउंट. बट द एम्प्लॉयर must obtain a written authority from the authorization from the employee, and the employee must have an account in a bank. बैंक में अकाउंट नहीं है तो कहाँ से डिपॉजिट होगा, तो ऑब्वियसली, एंड ये अकाउंट नंबर ये सारे डिटेल्स करके ऑथराइजेशन लेटर तो देना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली हियर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. Now here comes the next question. Section 7 of the Payment of Wages Act 1936 enumerates specific deductions that can be made from an employee wages while prohibiting others to protect employees' interest. Like कई बार कुछ इंश्योरेंस वाला होता है, कुछ स्कीम का कुछ होता है, कई सारे होते हैं, या फिर कुछ पेनल्टीज टाइप का कुछ भी होता है. दैट नो, कई सारे उन्होंने एक लिस्ट दिया है, बेस्ड ऑन दैट ओनली वो डिडक्शंस कर सकते हैं. Okay, now which of the following deductions is impermissible under the said act as it violates the principle of protecting employees' wages from unfair deductions? So in this case, agar deductions for absence from duty as specified in the employee's contract of employment, definitely वो deduct कर सकते हैं. So this is not impermissible, it is permissible. Deductions for recovery of loans from welfare फंड्स विद द एम्प्लॉयज रिटर्न कंसेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे उनको मिला होगा, तो यस, दिस इज ऑल्सो परमिसिबल. डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन फीस ऑथराइज इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉय, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब वो ज्वाइन कर रहे होंगे उस यूनियन में तो उन्होंने लिखा होगा, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी डिडक्टेड. सो ये भी परमिसिबल है. Deduction for penalties related to withholding of increments imposed by the employer without due process, ये permissible नहीं है. Until and unless वो सही से एक प्रोसेस फॉलो करके एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करके उसमें एक्सप्लिसिटली अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, ओनली देन ही विल बी एबल, अदरवाइज नो. विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और सस्पेंशन, ये सब इसमें deemed नहीं है, they are not deemed. So here the correct answer is D, which is impermissible in this case. Here comes the next question. As per section 7 of the Payment of Wages Act 1936, the maximum permissible deduction from an employee's wages during any wage period for the purpose other than payments to cooperative societies is capped at a specific percentage.
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि सेक्शन 7 में अभी हमने देखा था कि किस तरह के डिडक्शंस वो कर सकते हैं, किस तरह के डिडक्शंस वो नहीं कर सकते हैं, परमिसिबल, इम्परमिसिबल, वो सब हमने देख लिया है. सो हियर इन दिस केस रिगार्डलेस ऑफ द एक्ट्स प्रोविजंस, जो भी डिडक्शंस होंगे in any wage period from an employee persons, it shall not exceed 75% of their wages if the payments are made for for payments to the cooperative societies or 50% in the other cases. ठीक है, अगर पेमेंट हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कर रहे हैं उसमें 75% तक वेजेस उतना ही, इट शैल नॉट एक्सीड द डिडक्शन, जो भी है इससे ज्यादा नहीं होंगे. इन अदर केसेस इट वुड बी 50%. एंड वॉट एवर द एक्सेस, अगर डिडक्शन सरपास हो रहे हैं इस लिमिट से, फिर उसके लिए अलग से प्रिस्क्राइब्ड मेथड से उन्हीं के बेसिस पे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से वो रिकवर करना पड़ेगा. ठीक है, सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज सी. द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन इज 50% ऑफ द वेजेस एंड एनी डिडक्शन एक्सीडिंग दिस लिमिट रिक्वायर्स द prior approval of the appropriate government as part of the prescribed methods or the due diligence process that they have to follow. वही cooperative societies को कर रहे हैं तो then in that case it would be 75%. So here comes the next question. Consider the following statements regarding the imposition of fines under section 8 of the Payment of Wages Act 1936. So किस तरह से fines impose कर सकते हैं? Yes, sometimes कुछ गलती हो सकती है, कुछ इश्यू है, कुछ डैमेज हुआ, उसके लिए फाइन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक अच्छे से उन्होंने सब मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से वो फाइन वो कर सकते हैं. The maximum fine that can be imposed on an employee during a wage period is limited to 3% of their total wages for that period. उससे ज़्यादा नहीं फाइन कर सकते हैं. Two fines imposed on an employee must be recovered within 180 days from the date of imposition. Third statement क्या है? Fines collected from employees must be for funding the losses made by employee towards the establishment. Now you have to tell me which of these statements are correct. Okay, so in this case yes, 3% से ज़्यादा उनका फाइन नहीं होना चाहिए, ये तो true है, this is true. Now fines imposed on an employee must be recovered. कितने दिनों में भी रिकवर कर सकते हैं? आज उन्होंने किया है तो from the date of imposition it should be not 180 days but 90 days. So ये भी गलत स्टेटमेंट है. Fines collected from employees must be used for fulfilling losses made by the employee towards establishment. No, कुछ उन्हीं के लिए वेलफेयर कुछ प्रोग्राम्स है या फिर कुछ बेनिफिट है एम्प्लॉयज के लिए, उसी के लिए एक्सक्लूसिवली दिस फाइन, द अमाउंट that has been taken as fine should be utilized. So in this case only statement 1 is correct, rest are wrong. So here comes the next question. Under section 9 of the Payment of Wages Act 1936 regarding deductions for absence from duty, which of the following statements is or are correct? Now section 9 के हिसाब से अगर वो absence है कोई एम्प्लॉई या फिर एम्प्लॉईज कलेक्टिवली, अगर उनके लिए क्या उन पे मतलब डिडक्शन कर सकते हैं. So in this case the first statement says deductions are permissible only for the absence of employee for an employee from the designated workplace during the specified working hours as per the employment terms, based on the employment terms only. अगर वो वहाँ नहीं है then the employer has every right to deduct amount जितना भी उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा. If 10 or more employees collectively absent themselves without proper notice or valid reason collectively, deductions may include compensation of up to 8 days wages. उनका 8 days wages तक वो डिडक्ट कर सकते हैं, unless अगर कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया है by the appropriate government based on the industry in which they are, which we have already discussed. In this case, if you look at the answer, both these statements are true. So as per section 9 जो deductions for absence from duty जो आता है वो individual के लिए ये है, मतलब अगर work place पे नहीं है as per the
एम्प्लॉयमेंट टर्म्स उस टाइम पे नहीं है तो देन दे हैव एवरी राइट एज पर द टाइम एंड एवरीथिंग दैट दे कैन डिडक्ट. एंड अगर 10 और मोर एम्प्लॉयज कलेक्टिवली एब्सेंट होते हैं, ओके, विदाउट एनी प्रॉपर नोटिस और वैलिड रीजन, सो इन दैट केस 8 days तक उनके वेजेस ये लोग डिडक्ट कर सकते हैं. और अगर कुछ और उस टाइम पे उस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है तो 8 days का तो ये लोग कर सकते हैं डिडक्शंस. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्वेश्चंस किया है कुछ 9 to 10 सेक्शंस में. बाकी सेक्शंस का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. सो अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए या फिर ईओ और एओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी हैव 3 options for you as part of your preparation to help you out in your preparation or to guide you out in your preparation. एक तो है मास्टर कोर्स जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक योर वीडियोस रिकॉर्डेड, द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, उसके बाद प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट एज पार्ट ऑफ द मास्टर कोर्स. ये उनके लिए है जो बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं और उनको सब कुछ कंटेंट एक जगह पे चाहिए. अलोंग विद दैट एक वीकली गाइडेंस सेशन भी होगा आप लोगों के लिए विद कुलदीप सर. उस टाइम एवरी वीक थर्सडे के दिन होगा, तो उसमें आपको वो जो भी आपके क्वेरीज है या क्वेश्चन है एवरीथिंग ही विल बी लुकिंग इनटू. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें थोड़ा सा कंटेंट वीडियोस एक्सेट्रा उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सो दैट ये उनके लिए ऑलरेडी कुछ कंटेंट उन्होंने मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया है, बट यस दे वांट अगेन कंटेंट अलोंग विथ द टेस्ट सीरीज सो दैट दे कैन चेक आउट देमसेल्व्स कि वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. नाउ थर्ड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज उनके लिए है कि ऑलरेडी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है, बट नाउ दे वांट टू टेस्ट चेक देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. तो उनके पास पूरा कंटेंट उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, सो उनके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट ऑप्शन है जहां पे वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. सो ऑल दीज कोर्सेस एक्सक्लूसिवली for the upcoming UPSC EPFO both APFC and EO AO के लिए, that is for 2025, wherein we are expecting the notification sometime in Feb or March. So thank you very much for being with me. So फिर मिलेंगे next part में part 2 of the same topic, that is payment of wages at 1936.